चलो कोई बता सकता है बेटा उसका आंसर? पता है बेटा परम्यूटेशन तुम लोग को? the total number of ways in which 4 digits they can be arranged among themselves is 4p4a. Therefore, n of s is equal to 4p4. Therefore, n of s, the answer is equal to 24. इसका मतलब बेटा by using the digits 1, 2, 4 and 6 you can form 24 4-digit numbers. Next let a be the event. Let a be the event of getting about a 4-digit number of getting a 4-digit number divisible by 4. अब उसके लिए ना सब लोग को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बड़ा बैड होना चाहिए, है कि नहीं? पता होना चाहिए बड़ा कि विद नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. तो यहाँ पे बड़ा नीचे ब्रैकेट में तुम लोग लिख सकते हो, इन द ब्रैकेट बड़ा यू कैन राइट डाउन if the last 2 digit if the last 2 digit of the number the last 2 digit of the number is divisible by 4, and the number is and the number is divisible by 4. अब बड़ा सब लोग चेक करो कि तुम्हारे पास बड़ा जो डिजिट्स है 1, 2, 4 and 6 उसमें से बड़ा तुम लोग लास्ट 2 digits में बड़ा क्या रख सकते हो? पार्ट इनकम्प्लीट आंसर है, चेक करो उसमें, चेक करो if the last 2 digit if it is 12 number is divisible by 4. So if it is 16 so number is divisible by 4. Very good Rishabh. 10 perfect part, well tried. 24 and 64. लास्ट 2 digits बड़ा क्या होने चाहिए? 12, 16, 24 and 64.
ये देख फॉर द for the last two digit 12 for the last two digit 12 भी रिमेंबर सबसे पहले है ना यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स में ना 12 को प्लेस कर दूंगा 12 को पहले प्लेस कर दो बराबर। अब ये देखो सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो यहाँ। वन जो है बड़ा अपने पास एक ही है और उसको बड़ा एक ही प्लेस पे अरेंज करना है। तो बड़ा इट विल बी अरेंज इन बड़ा वन पी वन बेस। टू जो है वो भी एक ही है मैडम, एक ही प्लेस पे अरेंज करना है मैडम। दैट कैन बी डन इन वन पी वन बेस मैडम।
बट ये देखो, फर्स्ट टू प्लेसेस, बड़ा फर्स्ट टू प्लेसेस में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी। बोलो भाई, कोई भी का मतलब? कोई भी। बट कोई भी मीन्स कौन कौन आ सकता है बेटे? देख, आइदर इट कैन बी 6 4, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। या तो फिर इट कैन बी 4 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टू प्लेसेस, it can be filled by any of the two digits among themselves in 2p 2 ways, मैडम। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? That means the number of ways, madam, in which we can arrange, madam, the last two digits, madam, to be as 12 as a, madam, 2p 2 into, madam, 1p 1 into, madam, 1p 1। चलो, कौन बताएगा मुझे आंसर? 2p 2 का आंसर इज, तो 1p 1 का आंसर 1। इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा? 2। तो बेटा फॉर द लास्ट टू डिजिट, बेटा 12, वी गॉट बेटा 2 ways। अब मुझे बताओ बेटा, 16 के लिए कितना वेज मिलेगा? भाई कितना टाइम ले रहे हो? सिमिलरली 16 के लिए भी बेटा इट विल टेक 2 ways, 24 के लिए भी बेटा 2 ways होगा, एंड बेटा 64 के लिए भी इट विल बी 2 ways। धीरे धीरे करते हो, सब जड़े तुम्हारी सब हिली हुई है। ये सब तुम लोग ने बेटा परमुटेशन में नहीं पढ़ा था ये सर ने पढ़ाया था ना तुम लोग को? सिमिलरली बेटा आधे पौने लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। सिमिलरली और और लास्ट टू डिजिट्स, 24 4, there will be 2 ways। इसका मतलब बेटा therefore total ways बेटा will be 8। We can form बेटा 8
4-digit numbers which are being divisible by 4. चेक करो आंसर आ जाएगा. n of a is equal to 8. ये क्या करते हैं तुम्हें पता है? You can find the value of p of a. P of a is equal to पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। n of a upon n of s. What is the answer? Is it 1/3? चलो आगे. Probability part is over. Probability part is over. First half part of the chapter is over. Now let me proceed with the next part, which is called to be as probability distribution. Probability distribution. Now when we are going to start with this part again, there will be about a theory. Initially, but you will have to concentrate on the theory. You will have to make all your fundamentals clear, and then we'll able to start with the sums which have been based upon this mathematical expectation. So ready हो सब लोग? Let me start with the very first term, which is called to be as a random variable. जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, राइट है तुम लोग को? रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर जब पढ़ाया था। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ विद द वेरी फर्स्ट टर्म व्हिच इज कॉल्ड टू बी एज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, तो सबसे पहले सबको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वेरिएबल। Variable means the quantities whose values always keeps on changing. Such type of quantities they are called to be as variables, or in other words they are called to be as variates. But क्या हम लोग को इस बार खाली वेरिएबल में इंटरेस्ट है? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो. We are interested in a random variable.
random variable. So what is the meaning of the term beta random variable is? Random variable means a variable is said to be able to random. A variable is said to be able to random only when a variable can take the values which are depending upon the outcome of a random experiment. Very, very important. When we talk about the term random variable means what? A variable which can take any of the values. A variable which can take any of the values. कोई भी वैल्यू ले सकता है कोई भी का मतलब कोई भी but it is compulsory it will have to depend upon the outcomes of a random experiment. And now, after knowing that, the variable which can take any of the values which are depending upon the outcome of a random experiment, it has been called to be as a random variable. So let me talk about its notations. About its notation. A random variable is denoted by using capital X, and values of a random variable they are denoted by using the small x. Everyone should make a clear note. All the random variables they have been denoted by using a capital X, whereas the values of a random variable they have been denoted by using small x. And now here again you can say that it is always compulsory that variables they will be denoted by using only x. The answer is no. Sometimes a random variable it can also be represented by using capital Y. By using capital Y. So in that case, the values which will be taken by this variable, it will be denoted by using the small y. It will be denoted by using the small y. अब ये सारी बातें मैं तुम लोग को बड़ा एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा. ये देखो, when a coin is tossed twice, तो सिंपल स्पेस तो सबको पता ही है. When a coin, when it is been tossed twice, okay, okay, it takes the four outcomes, and that four outcomes are HH, HT, TH, and DT. And in that case, let H it represents the number of heads. Let H be a random variable which represents the number of heads. अब तुम लोग मुझे यहाँ पे ये बताओ कि when the two coins when they have been tossed, तो क्या कभी यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तुम्हें एक भी हेड ना मिले? आंसर यस और नो. यस, ऐसा कौन सा पॉसिबिलिटी है? ऐसा कौन सा पॉसिबिलिटी है? टी टी करेक्ट, वेरी गुड. इसका मतलब एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल which can take the value 0.
अच्छा मुझे ये बताओ व्हेन टू कॉइन्स व्हेन दे आर बीन टॉस्ड, क्या कभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है बेटा कि तुम्हें एक हेड मिले बेटा सिर्फ? अच्छा यस, एंड दैट पॉसिबिलिटीज आर एच टी एंड टी एच बेटा. So x is a random variable which will take the value one. अच्छा when the two coins when they are being tossed, क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा you can get two heads? अच्छा when two coins बेटा when they are being tossed you can get three heads. Three heads, four heads, five heads. देखिए बेटा तो x अपने मर्जी से बेटा वैल्यू थ्री, फोर, फाइव ऐसा कोई वैल्यू ले नहीं पाया. एक्स ने बड़ा सिर्फ कौन से वैल्यूज लिए? जीरो, वन, टू, बिकॉज बड़ा इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. चलो अब मुझे ये बताओ when three coins when they are being tossed we obtain how many outcomes? We obtain but how many outcomes? Eight outcomes, right? And what will be that eight outcomes? Bad है बड़ा तुम लोग को. Starting बड़ा with the three heads, then बड़ा with respect to two heads, then बड़ा with respect to one heads, and then बड़ा with respect to no heads. तो अब तुम लोग बड़ा मुझे बताओगे x is a बड़ा random variable which can take the बड़ा values of ट्राई करो सब लोग बड़ा आंसर देने की. करेक्ट बड़ा, वेरी गुड. x is a बड़ा random variable which will take the values बड़ा like 0, 2, 3. अच्छा क्या बड़ा वो अपने मर्जी से वैल्यू 4, 5, 6 ऐसा कोई वैल्यू बड़ा ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता है? पता चला तुम लोग को बड़ा?
because but it has to depend upon the outcome of a random experiment. Because it has to depend upon the outcome of a random experiment. अब ये देखो यहाँ पे, तो ये जो टर्म है ना बेटा 0 1 2 3, बेटा इट इज कॉल्ड टू बी एज रेंज सेट। अगर ये टर्म बड़ा तुम्हें रेंज से थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लगता हो, इन द सिंपल लैंग्वेज बड़ा इट इज अ सैंपल स्पेस, इट इज नन अदर देन बट इट इज अ सैंपल स्पेस। बट यहाँ पे बड़ा तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। जो तुम लोग को मैंने पढ़ाया था एच एच